Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English grammar for class 7, and this is lecture number 9. Lesson number 1, future continuous tense, page number 2 on your grammar books. In this class, you will learn all about the future continuous tense, which is also called the future progressive tense. It has two names, but it's only one tense, alright? This class is actually a part of a series of tenses created by Iqra to help you learn tenses. So my dear students, future continuous tense is very easy. It's not hard at all. So let's begin. On board we have the definition of future continuous tense, and it says it is used to talk about an action going on at some time in the future. I repeat, it is used to talk about an action going on at some time in the future. मतलब ऐसा कोई भी काम जो आने वाले वक्त में हो रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो आने वाले वक्त में हो रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कल बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो. मैं कल पढ़ रहा होऊंगा, मैं कल अपना सबक याद कर रहा होऊंगा. आई शैल बी लर्निंग माई लेसन टुमारो. हम शाम में खेल रहे होंगे. वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग. ओके, all are these examples of future continuous tense. Now let's see its sentence formation. Sentence formation of future continuous tense, and first one we have affirmative sentences. तो देखते हैं future continuous tense के affirmative sentences कैसे बनाते हैं. Look here, subject plus auxiliary verb plus be plus present participle then object. Subject, auxiliary verb plus be plus present participle and plus object. Let's suppose if we have I or we as a subject, we would use auxiliary verb shall. अगर हमारे पास सब्जेक्ट में I और we होगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे shall. उसके बाद be, then present participle. What is present participle? Present participle is a base form of verb plus ing. Present participle is a base form of verb plus ing. Example, go plus going equals to go plus ing is equals to going, and it is a present participle form of verb. Then object. Or if we have you, they, he, she, it, and all singular nouns or plural nouns, we would use auxiliary verb will. अगर हमारे पास you, they, he, she, it, singular nouns, plural nouns होंगे तो हम फिर will use करेंगे. Okay? Some examples of affirmative sentences of future continuous tense. Affirmative sentences are positive sentences and they have no negative word. Affirmative sentences positive sentences को कहते हैं जिसमें कोई negative word यानी कि not नहीं आता. Let's see.
I shall be learning my lesson at 5 PM. मैं शाम 5 बजे सबक याद कर रहा हूँगा. We shall be playing cricket on Sunday. हम इतवार को क्रिकेट खेल रहे होंगे. और here we can see I have used shall be with I or we. Next we have you or they. You will be expanding the business or they will be expanding the business. वो कारोबार expand कर रहे होंगे, फैला रहे होंगे. She will be doing homework. वो अपना काम कर रही होगी, वो अपना होमवर्क कर रही होगी. He will be doing homework. वो अपना काम कर रहा होगा. Next we have it will be raining tomorrow. कल बारिश हो रही होगी. Teachers will be distributing the prizes among students. Teachers students के दरमियान इनामात तक़सीम कर रहे होंगे. And you can see with you, they, he, she, it and plural nouns or singular noun we use will be. All right. Next we have negative sentences, and negative sentences are formed by adding the word not after the auxiliary verb or helping verb. Negative sentences इनकारिया जुमलों को कहते हैं और negative sentences बनाने के लिए हमें not add करना पड़ता है auxiliary verb के बाद या फिर helping verb के बाद. For example, I shall not, we shall not, you, they, he, she, it will not. और कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो उसके बाद will not. Now let's see some examples of negative sentences. You can see in these examples I have put a word not after the auxiliary verb shall or will. नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाने के लिए हमने इस shall के बाद या will के बाद not लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया. I shall not be learning my lesson at 5 PM. I shall not be playing cricket on Sunday. You, they will not be expanding the business. He, she will not be doing homework. It will not be raining tomorrow. Teachers will not be distributing the prizes among students. I hope you have understood very well about the negative sentences. Next we have interrogative sentence. Or an interrogative sentence is a sentence that asks a question. Interrogative sentence उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं. ठीक है. और इसकी फॉर्मेशन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, एंड वी पुट a question mark in the end. Here you can see shall plus subject I or we plus be plus present participle object and question mark. Or here will plus you, they, he, she, it, or any singular noun or any plural noun plus be plus present participle plus object or question mark. Now let's see some examples of interrogative sentences. Here we have some examples of interrogative sentence.
future continuous tense. The first one we have, shall we be washing our clothes tomorrow? Here you can see, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है shall से, और shall के बाद फिर सब्जेक्ट और फिर be, तो shall be ब्रेक हो जाता है और उसके बीच में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव, विल यू बी हेल्पिंग द पीपल? नेक्स्ट, विल ही बी वेटिंग फॉर मी? क्या वो मेरा इंतजार कर रहा होगा? विल यू बी हेल्पिंग द पीपल? क्या तुम लोगों की मदद कर रहे होगे? विल द बॉयज ईटिंग देयर मील्स? क्या लड़के अपना खाना खा रहे होंगे? I hope you have understood very well about the affirmative, negative and interrogative sentences of future continuous tense. Now let's do some book exercise on board. The first exercise we have exercise A, that is fill in the blanks with correct form of verb to make future continuous tense. बेटा ये fill in the blanks दिया हुआ है और इसमें हमें verb की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, बेस फॉर्म दी हुई है, और हमें सही वर्ब को यूज़ करते हुए, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए इसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन वी हैव शी फीड्स द चाइल्ड. नाउ वी हैव टू मेक इट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Okay, here we are. She will be feeding the child. We know we use will be with she, तो हमने will be लगा दिया यहाँ पर. And we have the base form of verb feed, and the present participle form of feed is feeding. तो फिर हमने will be के बाद feeding लगा दिया, तो ये क्या हो गया? She will be feeding the child. All right. The next we have we recite the Holy Quran, or what we use with we. Very good. Shall be. Yes, we use shall be, और shall be के बाद अब क्या करेंगे? Exactly. Recite, and the present participle form of recite is reciting, तो हम यहाँ लिखेंगे reciting. Reciting. Yes, we shall be reciting the Holy Quran. Okay. It's 3, 4, 5 are your homework. Now take out your books and open page number 4 for exercise D. And exercise D is translate the following sentences into English. ठीक है, नीचे दिए हुए जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज मजदूर अनकरीब सड़क बना रहे होंगे. मजदूर, यू हैव टू सी दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. ठीक है, और भी कुछ कहते हैं, मैंने यहाँ पे लेबरर लिखा है. ओके, सो लेबरर विल, अनकरीब के लिए आई हैव यूज्ड सून. तो लेबरर्स विल सून बी बिल्डिंग रोड्स. ओके, द नेक्स्ट वी हैव हम कल इम्तिहान दे रहे होंगे.
हम कल इम्तिहान दे रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि हम वी के साथ यूज़ करते हैं शैल बी। ठीक है, तो हमने लिखा वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम टुमारो। इम्तिहान देने के लिए हम टेक द एग्ज़ाम कहते हैं, गिव द एग्ज़ाम नहीं कहते। ठीक है, जब भी इम्तिहान देने की बात होती है तो हम उसको टेक द एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम टुमारो। एंड नेक्स्ट वी हैव बच्चे शाम में मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। So the children will not be playing in the ground in the evening. It is a negative sentence. ये negative sentence है because I have used a negative word not. हमने इसमें not use किया है, ये negative है। ठीक है, the children will not be playing in the ground in the evening. And 4 and 5 is your homework. Okay, my students, now take out your diaries and note down your homework. And your homework is do exercise B and exercise C. Okay, I hope you have understood well. We will meet inshallah in the next class. Assalamu alaikum.